नमस्ते नमस्ते दोस्तों, मास्टर्स, आत्मबंधन, आपका स्वागत है। आज हम एक्सेस कॉन्शियसनेस या बार्स के बारे में भी जानने वाले हैं। श्रीनिवास सर को आप सभी जानते हैं। सर इसरो में काम किए हैं और सर आईटी डिपार्टमेंट में भी एक बहुत उच्च स्तरीय आईटी कंपनी में भी काम कर चुके हैं। पिछली बार जब चंद्रयान ऑलमोस्ट लैंड ही हुआ था, तब उन्होंने पहली बार सेशन लिया था and he was very happy, and now he is taking, I think, the third session, and today he has agreed to speak to us about access consciousness. So he gave us so many tips and knowledge about acupressure. You can always go and look into the previous the sessions of his. And now I welcome Srinivas Rao sir from Bangalore to share his wisdom with us. Thank you, sir, for giving us your time, and welcome to this session. Thank you, sir. Thank you, Anuradha ji. Nice introduction. So it's my privilege that you are hosting me here, and then I also, like last time, I request you wherever it is required, you please do translation to Hindi. आप बहुत अच्छा किया था हिंदी में translation. So मेरा जी जी ये सर। पूरा इंग्लिश में रहता है। इसका हिंदी वर्ड्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमको ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन हिंदी का वर्ड्स मुश्किल है हमके लिए। सो जो भी कितना है वो ही बात करेंगे वो हिंदी में। ओके, सो Yes, sir. want to Yes, have sir. some 2 minutes prayer or meditation or something? No, Just sir. We'll go ahead, sir. okay, right. Thank you. I'll share it, and you can stop me wherever you want, wherever you have doubts. ओके मास्टर्स, यस, अब आपके लिए भी है कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें या कोई पॉइंट, तो आप रोक सकते हैं। So as she said, I worked in ISRO for 13 years as a scientist, and in Hewlett Packard for 16 years, and as a senior program manager, and then I was India operations manager for about 5 years in HP itself, and then I received some MVP award in 2006. So I learned alternative therapies in when I was in ISRO in 1992. From Dr. Bojraj, and then afterwards, several gurus came into the picture, and so Guru Vandanam. So I bowed to all the gurus, including my spiritual guru, Mataji Krishna Priya, for this session, for arranging this. So while we wanted to uh, speak out or share our knowledge with others, unless the Guru Agnya is there, we will not be in a position to get the time, so right time. So I really feel blessed. Recently, last week, I went 2 weeks back, 22nd, I went to Pyramid Valley and had good meditation there. And then afterwards, I am seeing good presentations here. Thank you, Patriji. Too. Okay. So the alternative therapies I have been practicing as a life coach, career counselor, then acupressure, pranic healing, access consciousness, bachelor remedies. For bachelor remedies, we use for the emotional healing, and access consciousness also is for emotional healing or physical healing, psychological healing, so many things. And the color therapy, probably in the next 1 week, we'll cover color therapy also. Okay, so we'll move on. So this today's topic is about the access bars. So what is this access bars and access consciousness? So the next one, there are 32 points in the brain. I'm going to show you in the chart clearly. Then these 32 points, don't get confused with the acupressure points. There may be some collision or some mapping of these points or Varmam points, etc. But let us not club that technique with this technique. So this is there are 32 points where just by touching the points uh, with the fingers very lightly, no pressure. We are not applying the pressure like in acupressure, just by touching the bars, like as you see in this picture here. So how he is touching here.
Okay, so with that, there will be the energy flow that will happen in the body, and from one side of the head to the other side of the head, a pipe will be created. Okay, so in the pipe, the energy flow will happen. So that means in any blockages within the body, within the head, they will be removed, and then the pipe will be carved. That is something like a bar. So that's the reason the energy, the access bars have come to the picture here. Okay, so then I got trained in access bars, and I was a facilitator. To become a facilitator from three different people, same course we have to do it. And then otherwise, if you do only from one trainer, we can do only the practice. We can be a practitioner. So I did the training, and then for 4 years, 5 years, I was doing the facilitation also. That means training others. Then I went through body processes. There are about 35, 36 body processes where we are by on our body, we keep our hands, and then we chant the English mantras, English statements literally. So thereby there is a shift in the energy level that happens in the body. And then got trained in money class, and then foundation level 1, etc. and all. So this is several classes are there, still they are going on. And yeah. Okay. So what I would like to mention is access bars or any alternative therapies can be used along with any traditional medicine like allopathy, homeopathy, Ayurveda, or any other treatment of healing systems. Access bars will help increase the body healing capacity. So no side effects from here. It's because we are only touching the points here and not even pressing. So the pain also will not be there, like we discussed in acupressure. This presentation is only for the education purpose only, and consult expert in the field before using it for the major ailments or any thing you want to do. However, I want to give few tips today as a carry from this meeting. Pregnant ladies, no harm in using treatment only by experts. So no harm, why I am saying here is because it is only the relaxation, ultimately the body relaxation. So pregnant ladies also will have a lot of tension and stress and lot of questions in their mind. So all the things will be answered when we are running the bars, access bars. Okay, so there is no harm in doing for that. Even the emergency, please consult family physician or medical system. अ, इसको The, मैं हिंदी में बोल देती हूँ क्योंकि ये मतलब एक किस्म से yeah, yeah, इम्पोर्टेंट है। yeah. तो श्रीनिवास सर ये कह रहे हैं कि जो एक्सेस बार्स का जो ये सेशन अभी ले रहे हैं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है। अगर आपके शरीर में कोई भौतिक शरीर में कोई बीमारी है या आप गर्भवती हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही ये करें। वैसे आमतौर पर आप ये एक्सेस बार जो उन्होंने समझाया कि सर के ऊपर माथे पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको दबा के एक पाइप सी खुल जाती है, ये रिलैक्स करती है। तो कोई आप यूज भी कर सकते हैं, गर्भवती महिला भी यूज कर सकती है। कुछ होता नहीं है, पर अगर कोई उपचार करना हो, ट्रीटमेंट करना हो, तब आप एक्सपर्ट के पास जरूर जाएं। जी सर। Yeah. So, yeah, so the access consciousness is a new age thought movement originated in US, California, and he is Gary Douglas at the top one. You can see here the Gary Douglas, who is the owner or creator of this access consciousness, and then he did it in around 1995, and he is Dan here. Okay, so Dr. Dan here. So both of them अचानक से मिल गया एक बार, and then they started discussing. Then he was a chiropractor. Gary Douglas was a chiropractor, and उससे दोनों मिलके अभी करेंगे, ऐसा करेंगे बोल के शुरू किया। तो ऐसा ये हो गया, access consciousness हो गया है। Okay, so this is very simple and easy technique, and there are about 31,000 worldwide facilitators or practitioners are there, more than that actually.
and in about 75 countries or 80 countries, people are practicing access bars. In India, about maybe 200 people are there. So when I learned in 2012 in India, there were only about 45 people. So afterwards, the more classes started happening. Both Gary Douglas and ये भी आया था, डेन हीर भी आया था बॉम्बे को, इंडिया को, दिल्ली को. So then the more number of people and the more number of facilitators are there here. And there is no harm in practicing by anybody, and no particular qualification required. A degree चाहिए, सब बस इंग्लिश, एक थोड़ा इंग्लिश मैनेजेबल इंग्लिश आया तो ठीक है. उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है इसके लिए. कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. एंड या ओके. मैंने ऐसा बताया था 32 पॉइंट्स ना, 32 पॉइंट्स है हर जगह में, बॉडी में या हेड में. वी टच इन द एक्सेस बार्स में खाली हेड को टच करते हैं, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को नहीं टच करते. एक बार इधर इधर टच करते हैं फिंगर्स का मिडिल में, और एक बार फीट में मिडिल ऑफ द फीट एक बार टच करते हैं. इससे बिना खाली द पेशेंट हैज टू लाई डाउन. We don't call patient, actually it is a client. Okay, anybody, even for I want to relax, I can just lie down and then we can run the bars for me, because that is a good relaxation technique for us. Okay, so the कोई भी the 32 पॉइंट्स में दबाने की अब जरूरत भी नहीं, जस्ट टच करने का है. सो इधर एक इम्प्लांट बैंड बोल के 2 पॉइंट्स है बीच में, सर का पीछे पीछे जब ये ज्वाइन होता है नेक और ब्रेन जॉइंट पॉइंट में एक पॉइंट होता है, ऐसा 3 फिंगर का आता है. उसमें 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स पकड़ के रखना है, टच करके रखना है. उसके बिना अब बाकी पूरा 2 मिनट्स और 3 मिनट्स होता है. इससे क्या होता है, वो जब पीछे का टच करते हैं, वो इम्प्लांट बैंड कर टच करते हैं, उससे पुराना वाला जो भी प्रॉब्लम्स अपने में है वो पूरा निकल जाएगा. इवन दे कॉल इट द पिछले जन्म का प्रॉब्लम्स जो भी है वो भी निकल जाएगा. ओके, सो वन caution is here, when we are doing access bars, or when you are doing access bars, don't wear any electronic items on your body. जैसा watch, smartphone, everything you have to keep it aside. क्योंकि there are incidents where electronic watches get damaged for 20-24 hours. Afterwards, they started working. But the energy level that is being produced by body, जो एनर्जी अपना बॉडी से जो आता है, उसी से ये खराब होने का चांसेस है. बाहर से कोई आ रहा नहीं. अंदर के अपना बॉडी में जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है, जब वो ब्लॉकेजेस निकलने के बाद जो एनर्जी सर्कुलेट होता है, उसी से वॉच वगैरह खराब होने का चांसेस है. इसलिए वॉच और मोबाइल पास में नहीं रखना चाहिए. और अनदर caution, जब वी आर डूइंग इट, डोंट क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस, or don't cross legs. Okay, there are two parts in this. One is the physically doing, यानी ऐसा लेट के पकड़ना, पॉइंट्स पकड़ना, 32 पॉइंट्स पकड़ना. दूसरा ओरल, verbal, we ask questions, we chant certain things. Okay, so that I'm going to cover this as a takeaway for you, which anybody can do it. So that is one. The two parts is this, accessing to the consciousness, that means to get the awareness. That is the reason they call it the access consciousness and access bars, because as I told you, various levels of classes are there in this one. So initially the first access bars anybody can do, बट बाकी क्लासेस जो करना चाहते हैं बार्स करने के बाद ही कर सकते हैं वो लोग. ओके, सो ऐसा. सो दिस इज वी सी इम्प्रूवमेंट इन ऑल राउंड हेल्थ एंड वेल बीइंग. एंड फॉर 30 to 40 minutes each session takes 30-40 minutes, yeah, even up to go to 1 hour also. Okay, the quick recovery from diseases and injuries, negation of influence of negative energies. जब अपना बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जीज रहता है, नेगेटिव थॉट्स रहता है, और नेगेटिव थॉट्स भी चले जाएगा ये करने से. तो बेटर मेंटल क्लैरिटी एंड कंसंट्रेशन,
So we get when bars are running particularly, अच्छा नींद आता है, ज्यादा लोगों को नींद आता है. मैं तो स्नोरिंग भी करता हूँ जब मैं कोई करता है मुझे. वी कॉल इट बार स्वैप्स. सो टू बार्स फैसिलिटेटर्स और टू बार्स प्रैक्टिशनर्स अपने आप को किसी को करते हैं. वी कॉल इट द बार स्वैप इट इज. सर सर थोड़ी देर ये स्लाइड बंद कर देंगे, एक तो हमें वो बता दीजिए कैसे टच करना है, क्योंकि आप जब बताते हैं तब समझ में आता है, नहीं तो ये स्लाइड ज्यादा दिखती है. फिर आप ये स्लाइड शेयर कर लेना. ओके. हाँ. So जब points ना the I'm not points actually I will show and then come back to you. So we were here 32 points I have explained, and then improvement in all round, quicker recovery from diseases and injury, negation, better manual mental clarity, increased energy and stamina, changes in addictive behavior patterns. So अभी किसी का addiction है, उस ये करने से उसका addiction भी कम होता है. And changes in addictive behavior, reduction or elimination of the pain, peaceful and restful sleep. इंसोमिनिया बोलते हैं, रात में नींद नहीं आता है, 4 बजे 4 घंटे तक उठ के रहते हैं, नींद नहीं आया बोल के. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी अवॉइडेड विद दिस ट्रीटमेंट. रिसीविंग अबेंडेंस विथ इज लेस रिएक्टिव देन द सिचुएशन. सो जब झगड़ा होता है, हम जब भी किसी बात को ही बोलते हैं, हमको इमीडिएट रिएक्शन होता है हमारा. और ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, सो वी सोच समझ के आंसर देंगे. ये करने के बाद तो माइंड काम होता है, क्यों बोल रहा है ऐसा सोच के हम आंसर दे सकते हैं. Okay, so then I'll just stop this sharing. And age limit, there is no age limit. Children's to aged, all category of people can be done. Even special children with learning disability, milestone delay, etc. also can be done. So now इधर क्या होता है? What just anybody can do this one. There is no problem. But because we cannot really teach, we are not authorized to teach publicly like this unless it is a paid program by anybody. So I cannot give all the points here, but just some tips I will tell. Okay, so when we are having the back side of the point here, it comes like this. Okay, so easy way is where implant band, when you are just touching, you can switch on the videos and try to find out your points there. So that no, when uh, just move like this from the back, and 3 fingers, there will be some slit kind of a thing you will get. यानी ब्रेन में एक लाइन का जैसा आता है, दो ब्रेन का टुकड़ा उधर पीसी ज्वाइन होता है इधर. लाइक दैट इट इज अ गैप विल बी देयर बैक, near the back of it. Okay, so you can try to get that points there. And how long you have to hold. When you get the point, just you can say that there is point that implant band. You are searching kidhar hai, kidhar hai, kidhar hai bol ke. So you are asking the questions, and at some point you will get it, that automatically you will get it. That is the beauty of it, access consciousness. So क्या होता है इधर, जब when we touch these points there, hold it for a few minutes till there is a pulse sensation. जब पल्स मिलता है उधर, थोड़ा देर के लिए आप पकड़ना चाहिए, वो टच करके रखना चाहिए उधर. So now I am getting it 1, 2, 3, 4. Then when you hold you have to make a statement of implant band run. That's all, only simple statement, implant band run. That's all. So automatically it will be running, that implant band will be running. So now, for instance, that can be run for 10 minutes, 5 to 10 minutes, 8 to 10 minutes we can run. क्योंकि अपने आप में वो पूर्व जन्म का भी होता है, प्रॉब्लम्स निक्षिप्त होता है उधर, और अभी इस जन्म का पिछले जो भी किया था वो प्रॉब्लम्स भी निक्षिप्त होता है. When they are, all these problems are stuck in our body, we are not really ourselves. So when we remove all these negative energies and this one, we can change our energy level. So you want to ask some question or tell something? या सर.
Sir, I personally have question. Yep, So yep, when I tell me. touched, I can feel, मतलब मुझे वो जो ब्लड का चलने का वो होता है ना, वो समझ में आ रहा है अपनी उंगलियों में, है ना, वहाँ पर Mm-hmm. आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी 1-2 मिनट भी रख लिया, लेकिन जब मैं वहां पर रख रही हूँ तो क्या उसका असर, कि जैसे मेरी, ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों तक या मेरे पैरों तक इस तरह का कुछ ऐसा होता है क्या? क्योंकि एक्यूप्रेशर में भी मुझे कुछ ना कुछ लगा था कि अभी मेरे, आपको क्या लगा है? अभी आपको अभी क्या सर लगा? आंखों में ऐसे लगा कि यह आंखों तक टच हो गया है, जबकि मैं हाथ इधर रख रही नींद आ जाता है। हूँ। हाँ। यू विल गेट स्लीप। हाँ, अभी तो मैं बैठी हूँ, स्लीप मेरे को इट्स। अलर्ट होना है, मेरे को पता है। लेकिन मेरी आंखों में ऐसे हो रहा है, या ऐसे। नींद आता है, इसलिए व्हेन वी टच दैट यू गेट टू स्नोर। आई स्नोर डेफिनेटली आफ्टर 10 minutes 15 minutes. What happened I don't know. First 5 minutes only I will be awake. And particularly the people, those who are having a lot of the growth problems and all, we can happily do this one. Absolutely. The like special children, mileage, growth milestones, delay problems, anybody we can do. But only thing is some people will have a lot of irritation. I tried for one boy of 25 years, 26 years. He never allowed me to touch his head. ओके, सो मैंने एक और एक बच्चा को किया था, उसको 22 times से डे फिट्स आ रहा था। फिट्स मालूम है ना, हिंदी में क्या बोलते हाँ हैं हाँ, उसको? मूर्छा, चक्कर आना, या मूर्छा। मतलब ऐसे मिर्गी का दौरा पड़ना, दौरा। हाँ, हाँ, दौरा पड़ना। फिट्स आता है, ऐसा ऐसा होता है। पीपल विल ट्राई टू गिव दिस वन। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम बॉय, वेरी स्लिम बॉय। एंड 16 years से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, और ही कन्फाइंड टू व्हील चेयर और बेड, दैट्स ऑल, नॉट गोइंग टू दिस वन. So when they called me, of course I did multiple things to reduce it, but this is one of the main things which has calmed down his mind. Access bars. So when we touch this not only one point here, there is something called the power band. The full we hold here like this. Are you able to see this? यस यस, बिल्कुल पीछे। Huh? Like this, सर का हाँ पीछे, हाँ। just okay. And that is a power point. Okay. So power band run, power band run, power band run, 3 बार बोलो, वो अपने आप power band run होता रहता है। जब when you are feeling the, sorry, when you are feeling the pulsation there, you can continue for till the pulse stops. That is the indication of running. So first it will start pulsing. So when you are holding it more time, it will stop pulse. So that means वो प्रॉब्लम उधर के लिए, वो एनर्जी का वो पॉइंट स्टॉप करके दूसरा पॉइंट को जाना है। दैट इज द इंडिकेशन। तो सर आपने बस क्वेश्चन आंसर्स ले रहे, तो एक और बस एक, कि आपने एक चीज सेंटेंस बोला था कि व्हेन से सपोज टुडे आई हैव डन एंड नाउ द पल्स इज नो मोर एंड आई डिड इट एंड नाउ इट्स कंप्लीट आफ्टर 2-3 minutes। हाँ, हाँ, तो अब मैं कल दोबारा से करूंगी तो दोबारा से फिर पल्स मतलब देखना है, मतलब क्या सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग। टेक्निक इज सेम थिंग टिल you have to start searching the point. Once you get the point, you can start feeling the pulse. और pulse जब आता है and energy is flowing happening, when it stops, the energy flow stops at that level. Okay. So ओके। when you start next time, next session, that is a different अलग का problem है। अच्छा अच्छा। ओके, सो जब मैं ये बॉय का बारे में बोल रहा था, उसको 22 times पर डे फिट्स आ रहा था। आई टचड दिस पॉइंट्स, ऑल दिस पॉइंट्स व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड एक्सेस बॉक्स में। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट एंड आस्क्ड कितने बार हुआ, 6। Till that time he was getting 20 to 25 times per day fits. In one session it has come down to 6, and that day, second day I continued the treatment, and the third day when they told the frequency and intensity have reduced, यानी जितना जोर से आता है वो फिट्स आता है, वो जोर भी कम हुआ, और द फ्रीक्वेंसी यानी 1 घंटा में एक बार आने का 4 घंटे में एक बार आना,
ऐसा 22 से 22 means it is almost 1 per hour. Sometimes 3 to 4 times per hour he was getting. So that 6 times it has happened. So like this, no, when in a combination of that particular treatment person I treated with a combination of access bars and batch flower remedies and pranic killing, all the three combination I used. But after 5 days or 6 days, it has reduced drastically, but there was an impact of Paurnima and Amavasya again on the that kind of people, those who do not have the energy resistance. So a slight increase was there for that. But afterwards, we could not continue the treatment for some reason or other. But that is very powerful and very effective. So one of my colleagues who was in ICU after paralytic stroke, I went to the hospital. When he shifted to the room, he was not sleeping at all. Throughout the day, he was not sleeping, talking, trying to talk, because the paralysis, again, those people know they want to express, but they cannot really fully express. Even wife was not understanding. I went to a hospital and just touched these points. Within 5 minutes, he fell asleep. 5 मिनट में सो गया वो, और उसको 4 घंटे के बाद उठा वो। नींद से बाहर आया था। हम्म। वो वाइफ फोन करके बोली थी मुझे, बहुत अच्छा किया आप आके, जो जो भी किया था, इट इज वेरी गुड, बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग स्लीप फॉर लास्ट 3 days or 4 days. Okay, so the even for one of my uncles also I did in when he was in hospital, I did that. And on my inauguration day, so the this is basically the 32 points which are there, and we have covered all the points showing there. And each point you have to touch, and like this, there is various methods of touching are there. Okay, so now the examples I am telling, because where all situations we can use. Say there's a communication I told. In the communication problem, the two students, my son's friends came to my house, and one boy was having a stammering, and the other boy does the yoga, meditation, and still he has a speech fear problem. He cannot speak in front of the even 4 5 people also, he cannot speak. अ, वो क्या हुआ, एक हमारा घर को आया तो इंजीनियरिंग 3rd ईयर स्टूडेंट, जो उसको स्टैमरिंग हुआ था, हो रहा है, अकलना, क्या बोलते हैं बात को, अकड़ना. सो फॉर स्टैमरिंग हो दैट रहा है बॉय, मतलब कि बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक। हाँ, बोल नहीं पा रहा है. हम्म। सो हकलाना, हाँ बोलना सही जो बोला। बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है, लेकिन हकलाना। बात करने के लिए थोड़ा शाई होता है उसके, क्योंकि ऐसा स्टैमरिंग होता रहता है, पूरा लोग से बात करना बोले तो स्पीड कम होना चाहिए वो लोगों का. सो आई डिड अनुपमा 30 मैम बोल मिनट्स. रहे हकलाना। हाँ, हकलाना. So the 30 minutes for both the students I did. Both are in different colleges. The first boy who is having stammering, he sent me a mail within 2 3 days. Sir, uncle, we had a very typical situation in our college. He is a part of cultural activity, and then there is a chaos. यानी पूरा गड़बड़ चल रहा था स्टेज का ऊपर. कोई क्या बात कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा. वो टाइम पे ये जाके उधर पूरा कंट्रोल कर दिया, और बहुत अच्छा बात किया था. वो लेटर भेजा था मुझे, तो खाली बिकॉज ऑफ ओनली डिफरेंस इज एक्सेस बस. 30 मिनट्स एक्सेस बार से उसको ऐसा हुआ. तो उसे धैर्य से जाके स्टेज का ऊपर बात करके पूरा लोगों को कंट्रोल किया था वो. So that is the courage he has got, and that is the way he is able to speak. And दूसरा boy, वो क्या हुआ, उसको विप्रो का द विप्रो आर कम सम एमएनसी केम एंड कंडक्टेड एग्जाम कंडक्ट किया था. 500 स्टूडेंट्स में से कोई 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुआ रिटर्न टेस्ट के बाद, और 10 से 3 आदमी को स्टेज का ऊपर आने के लिए कहा था. ये तीनों आदमी में एक था ये बच्चा, और ये स्पीच देने के लिए बोले तो बिना डर डर से बात करना शुरू कर दिया, स्पीच दिया था.